drugs will work out. We know that what are the pharmacological action and how they will act on the target receptor, that we know. The important part what we have to learn, what we are going to face in our examination is synthesis, structure, IUPAC name, uses, sometime the targeting receptor. So this drug is there, then where it will act, that time you have to write. These are acting directly on controlling center, that is central nervous system. So main type of receptor you have to say, you have to elaborate the main types of receptor, that is the neurotransmitter, different kind, these drugs acting on different kind of neurotransmitter. अगर कोई एक नाम याद आ रहा है, then you write any one name of the neurotransmitter what we have discussed among that. ठीक है, अगर neurotransmitter का name पूछ रहा है, where these anxiolytics, sedative hypnotics will work or will act, then you have to write name of one neurotransmitter or two neurotransmitter if you are remembering what we have discussed among that. अगर SAR आ रहा है, write the SAR of benzodiazepine, particularly he is asking about the benzodiazepine, and you write almost all 9 points of benzodiazepine. First of all, draw the structure, then number the structure. After that, write step by step how does what kind of structure and what is the activity and what is the relationship. Then if is so other drugs, I already said that if you are having star mark on that drug, for that drug you have to study almost all everything related to that drug. Okay, almost all means you have to study the synthesis, you have to study the SAR, you have to study the uses, pharmacological action, or if any kind of developments were there on that drug molecule, that you have to cover up if it is, if the drug is contains star mark. Otherwise not required. Otherwise you have to give focus only on the structure, IUPAC name, uses. If brand name you are remembering, then write the brand name of that drug. Okay, or category belonging to the class. Okay, so accordingly we have covered up the chlorodiazepoxide. Chlorodiazepoxide is also not having any kind of star mark. So structure we have discussed, chemical name, IUPAC name, how to write, that we have discussed. Now we'll move on to next drug molecule, that is diazepam. Okay, here also you don't have any star mark on the diazepam. स्टार मार्क नहीं है इसका, स्टार मार्क नहीं है तो इसका सिंथेसिस नहीं करना है. वेर एवर द स्टार मार्क इज देयर, यू हैव टू डू द सिंथेसिस ऑफ दैट ड्रग. ठीक है, अगर नहीं है तो डोंट गिव कॉन्सेंट्रेशन ओवर देयर. ठीक है, नाउ विल राइट. सो आयुपैक नेम जो लिखते हैं हम लोग, just you remember that one, because in your examination you are going to get the question like convert the name to structure, structure to name. ठीक है, that time this IUPAC nomenclature will help you to convert the structure to name and name to structure. ठीक है, now next drug is diazepam. Drug diazepam. Yeah. Now I am going to write the structure of diazepam. Just give concentration over here how I am writing the structure. Structure मैं कैसे लिख रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, जस्ट उसी पर फोकस करना. पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों क्लोज हो गया है.
Someone can on their videos. कोई एक अपना वीडियो ऑन करो. Okay, thank you. क्या हो रहा है इसको? Okay. Now it is visible. Screen visible है ना? Yes, ma'am. It like anything. Okay, I am drawing the structure of diaziform. Here we are having one double bond. Here we are having phenolic group. And so we are having double bond over here. On 7th position, we are having one chlorine atom. Okay. Now here we are having one methyl group, and name of this one is diazepam. Okay. Last time what we have written, the name of that drug is chlordiazepoxide. Chlordiazepoxide का same structure था. Phenylic group we are having. Phenylic group एक था अपने पास. याद है? If you are remembering the structure, please remember the structure. Well, I am writing. Practice अभी से कर लो जब जैसे मैं लिखती हूँ. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना था डाइजेपम और क्लोरडाइजेपोक्साइड में. Here in this drug we are having similar 7-membered ring, but the difference only that difference यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सब सेम था, कुछ नहीं था. बट हियर वी आर हैविंग मिथाइल अमाइन. ठीक है, सब सेम था, बट हियर ओनली द डिफरेंस इज दैट वी आर हैविंग मिथाइल अमाइन. बाकी का सब सेम था. वी आर हैविंग द क्लोरीन एटम, वी आर हैविंग द फिनाइलिक ग्रुप ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे अपने पास फिनाइलिक ग्रुप था, क्लोरीन था, सेम था, कुछ नहीं डिफरेंस था. बट हियर ऑन दिस एन एटम वी आर हैविंग वन ऑक्सीजन एटम, दैट इज ऑक्सो. यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला चार्ज. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर अबाउट द क्लोरडाइजेपोक्साइड. ये स्ट्रक्चर था क्लोरडाइजेपोक्साइड का. ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है अपने पास? हियर वी आर हैविंग द मिथाइल अमाइन ग्रुप. ठीक है, here we are having the oxide group on nitrogen atom. Similarly here also we are having chlorine atom. ठीक है, how to write this how to write the IUPAC name for that drug, you know. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको पता है कैसे लिखना है, दैट वी नो. बट हियर सी
What is the difference that I am going to explain you? Chlorine है अपने पास. On 7th position we are having chlorine. I am going to write the name for this one, 7-chloro. In 7th position I am having chlorine, 7-chloro. ठीक है. After that what I am having? 1 on first nitrogen atom. What we are having? 1 methyl group. ठीक है. Remember the IUPAC name because it is very difficult while writing the name for the conversion of name to structure and structure to name. For that you are going to get 2 marks. ठीक है. 7-chloro, 1 methyl. On first position we are having methyl. On 5th position what we are having? कौन नोटेशन कर रहा है भाई? कोई तो कुछ तो कर रहा है इसीलिए. Methyl. On 5th position we are having phenyl group. That's why I'll write 5 phenyl. ठीक है. Then what else we are having in this structure? On third position we don't have any kind of unsaturation. Unsaturation नहीं है, double bond नहीं है. So there what will write? 3. What will write? 3H. H means hydra. We don't have anything that is saturated one. So अब next point अपना क्या है? Similarly we have to write the SAR. SAR इसी के अकॉर्डिंगली रहेगा आपका. SAR जैसे था वैसे ही केमिकल स्ट्रक्चर का नाम रहेगा, IUPAC नेम रहेगा. देन 1 और 4 के बीच में क्या है अपने पास? 1 and 4. 1 we are having nitrogen atom. On 4th position also we are having nitrogen atom. So 1,4 benzodiazepine. Benzodiazepine. On second what we are having? Ketone. Benzodiazepine 2-one. ठीक है. 5th पोजीशन पे फिनाइल है, फिनाइलिक ग्रुप है. एंड 7th पोजीशन पे क्लोरीन है. फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है. ठीक है. हियर ऑन थर्ड पोजीशन वी आर हैविंग 1H दैट इज हाइड्रा. ठीक है. इन बिटवीन 4 and 5 we are having 1 double bond. ठीक है. 1,4 benzodiazepine 2-one. ठीक है. ये तो खत्म हो गया अपना. You mentioning this one or not, that is okay, but it is belonging to the class of benzodiazepine. ये हो गया अपना benzodiazepine. ठीक है. डायजेपम के इसका ये हो गया अपना डायजेपम. ठीक है. This one is our diazepam. This one is chlorodiazepoxide. What is the difference here? In diazepam we are having ketonic group, but in chlorodiazepoxide we are having methylamine group plus 1 oxane, one oxide, but that is charged one. ठीक है. The difference, it is belonging to the, of course both the drugs were belonging to the category of benzodiazepine, that is 1,4 benzodiazepine. केमिकल क्लास तो सेम है. डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर पूरा फिनाइलिक ग्रुप सेम है, क्लोरीन ग्रुप सेम है, सब सेम है. बट द डिफरेंस इज इन डायजेपम यू आर हैविंग कीटोनिक ग्रुप, बट हियर यू आर हैविंग 1 methylamine. On next nitrogen atom, 4th nitrogen atom, you are having what you are having here in between this. यहाँ एक डबल बॉन्ड था ना. ठीक है. Here we are having, so this is the difference between diazepam and chlorodiazepoxide. ठीक है. So diazepam act as chemical, it is also belonging to the category of 1,4 benzodiazepine. Uses अगर इसके देखेंगे, this is used as anxiety state, to reduce the state of anxiety in patient, as well as anticonvulsant, pre-anesthetic medication, as well as disorder associated with different kind of central nervous system.
बहुत सारे यूजेस है इसके. डायजेपम इट इज अ वेरी पॉपुलर ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूजेस. सो मेनी यूजेस आर देयर. इट इज यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग. ठीक है, एंटी एंजाइटी, टू ट्रीट द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द एंजाइटी, इसको भी यूज कर सकते हैं. अनदर वन यूजेस फॉर डायजेपम इज एंटी कन्वुल्सेंट. एंटी कन्वुल्सेंट, anticonvulsant. Another use, pre-anesthetic medication. It can be used as pre-anesthetic medication. Okay, I am writing the short form, pre-anesthetic medication. Also, any kind of disorder which is associated, minor disorder, minor or major disorder, which is associated with the central nervous system. So this can be utilized in four category, four kind of disorder associated with the central nervous system. Diazepam used as anti-anxiety, anti-convulsant, and pre-anesthetic medication, and disorder associated with the central nervous system. But chlordiazepoxide, you are having only one use, that is what is that use? Sedative and hypnotics. Sedative, hypnotics, and anxiety. But here, anxiety, anticonvulsant, pre-anesthetic medication, as well as central nervous system, in different kind of disorder associated with the central nervous system. So यहाँ तक हो गया अपना diazepam. So this is about the story of your drug diazepam. Next we will see the next drug. So this is the major drug in sedative and hypnotics. For this is the star mark containing drug in your syllabus, that is nitrazepam. So if it is having star mark, then you have to go with the synthesis. अगर star mark है तो आपको सब कुछ इसके बारे में देखना है. Brand name, users, synthesis, as well as any kind of modification is available on that drug or not. No development, no modification. The drug is similarly used as it is. Modification कुछ नहीं है इसका, जो है वही है. No derivatives has been synthesized yet apart from the nitrazepam. ठीक है, I am going to write the structure for this drug. Nitrazepam का structure लिख रही हूँ मैं. So give concentration over here. After that we have to see the synthesis of the same drug. ठीक है. Till now what we have did, we have written only one electron attracting group, that is chlorine. But in nitrazepam, in place of chlorine, we are having one nitro group. We don't have anything here. We are having one hydrogen atom upon this nitrogen atom. ठीक है. सिमिलरली जैसे अपने पास डायजेपम में कीटोनिक ग्रुप था, वो कीटोनिक ग्रुप एज इट इज रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. ठीक है. So here, so this one is as it is. Here we are having one ketonic group. ठीक है, यहाँ पे अपना एक ketonic group. ये phenol as it is, ये benzene as it is associated with this 7-membered ring. But only the difference in nitrazepam is you are having NO2 over here. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक NO2 group है. एक NO2 group you are having, but here similarly you are having double bond over here, one nitrogen over here. ठीक है, nitrogen over here, one phenolic group over here. कुछ भी नहीं है, बस बाकी का सब सेम है. ठीक है. So rest of the things are same. Only the difference between diazepam and nitrazepam is here. In the diazepam, what you are having upon the nitrogen atom, you are having one methylic group. But here in nitrazepam, you don't have methyl group. You are having hydrogen atom, but ketonic group is as it is phenyl. और डिफरेंस क्या है? नाइट्राजिपम है, इसीलिए ऑन दिस पोजीशन 7th पोजीशन यू आर हैविंग NO2 ग्रुप. ठीक है, नाइट्राजिपम. अब now I am going to write the chemical name for this drug. Before writing the chemical name, I will give the numbering to this one, that you could easily figure out which kind of functionalities are there in the structure. Second position, third position, and this one is fourth. ठीक है, ये अपना 5th और ये अपना 6th,
7th position, of course, nitrogen atom, 8th position, 9th position. Okay, 8th and 9th. So this bond is in sharing. So this one is minor and this one is major ring because it is more number of carbon atom plus more number of nitrogen atom, nitrogen and heteroatoms are there with one carbonyl group. So that this one is major group. Apart from that, it is associated one kind of phenylic group. ठीक है. अब इसके नंबरिंग तो you know how to give the numbering to this one 1 2 3. Similarly सारे 1,4 benzodiazepine का यही रहेगा. The labeling of carbon atom 4 5 and 6. So ये हो गया, ये हो गया. Now I am writing the chemical name for this one. Of course, on 7th position, what we are having? We are having on 7th position, what we are having? We are having nitro group. We don't have any chloro group here. On 7th position, we are having nitro. ठीक है, nitro plus. अब क्या है भाई अपने पास? On 5th position, what we are having? Phenol. Phenyl. On 5th position, we are having phenyl group. Okay, and belonging to the category of 1,4 benzodiazepine. ज्यादा लंबा है नहीं इसका नाम. 1,4 benzodiazepine. हो गया benzodiazepine. ठीक है. Now what else we are having? On 2nd position we are having ketonic group. अब हमने छोड़ा क्या? 2-ol. What we left? On 3rd position what we are having? Hydra. After phenylic group, if you are written the chemical name this much, that is also correct. If you are not mentioning, if you are mentioning this name, you can write the name, chemical name in a 2 form. Okay. Now you can write, apart from this, you can also write nitro 5 phenyl. On 5th position you are having phenyl. Okay. After phenyl you can write on 3rd position. If you want to mention the saturation, 3 hydra and rest of the thing same, 1,4 benzodiazepine, 2 on. You can write in this form also. 3s 3h 1 4 benzodiazepine, same thing. Okay, benzodiazepine 2 on. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो. You can mention that also. If you are not remembering, then also you can write that much structure also. That is also correct. ये भी लिख सकते हो आप लोग. If you want to mention the hydra, then you can write hydra. This is the normal name. This is the full IUPAC name. अगर आपको लिखना है. ठीक है. Now this drug, uses of this drug, this is used as hypnotics, particularly hypnotics. Okay, particularly hypnotics. It is also used as sedative in amnesia. You know amnesia? What is amnesia? It is also used as sedative, but sedative, of course it is sedative. Sedative का मतलब the drugs which are used to treat the disorder, anxiety disorder associated with that, but relaxation. This drug will give relaxation. This drug will produce complete sleep. Hypnotics are the drugs which produce sleep similar to the natural sleep. It depends on dose of the drug. Nitrazepam you can use as a sedative. You can utilize that one as a hypnotics. So this drug you can use as sedative in case of treatments of insomnia. Insomnia means, amnesia. Amnesia means, किसी को पता है? कोई बोल सकता है?
memory loss. Loss of treatment in the loss of memory, ठीक है, forgetfulness. Forgetfulness, loss of memory, treatment of loss of memory, ठीक है. In large dose, it can be utilized as hypnotics. In small dose, it can be used in the treatment of disorder associated with the central nervous system, that is as sedative, that is forgetfulness, amnesia, used in the treatment of amnesia. As well as sometimes it can also be used as anticonvulsant plus skeletal muscle relaxant. It can also be used as anticonvulsant. Sometimes it can be used as anticonvulsant and muscle relaxant. This can also be used as skeletal muscle relaxant. Skeletal muscle relaxant. पूरा नहीं लिखते हैं. Skeletal muscle relaxant. Short form लिखना. It can also be used as skeletal muscle relaxant. ठीक है. Dose, it depends on dose. मैंने पहले जैसे बोला, if it is in large dose, that can be utilized as hypnotics. If it is in small dose, less than the larger doses, that can be act as sedative. Anticonvulsant, skeletal muscle relaxant. So these are the uses of this drug. Now we'll see the synthesis of nitrazepam. ठीक है, सिंथेसिस देखेंगे हम लोग अभी. सो एक ही सिंथेसिस पढ़ना है आपको. Only one synthesis in sedative and hypnotics. In the class of drug which are associated with sedative and hypnotic, you have to study only one synthesis, that is nitrazepam. बाकी के सारे structure, IUPAC name and uses. ठीक है. Synthesis, we'll see the synthesis of this drug. So what we have to use as a starting material for the synthesis of nitrazepam. ठीक है, हमको पता है नाइट्राजेपाम का स्ट्रक्चर क्या है. उसके पास एक बेंजीन रिंग है और एक फिनाइलिक ग्रुप है और एक 7 मेंबर्ड रिंग है. सो हाउ टू सिंथेसाइज दैट स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द स्टार्टिंग मटेरियल. विल चूज द स्टार्टिंग मटेरियल टू सिंथेसाइज द नाइट्राजेपाम. स्टार्टिंग मटेरियल हमको पता है अपने पास NO2 है. ठीक है, सो विल टेक द स्टार्टिंग मटेरियल NH2 because we are having one N on that, one N associated with the minor ring. ठीक है, so name of this starting material is 4 nitroaniline. ठीक है, aniline. so 4 nitroaniline कैसे हो गया भाई, ये भी पूछ सकते हो आप मुझे. 4 nitroaniline. ठीक है, ऑन 4th पोजिशन यू आर हैविंग NO2. ठीक है, अमाइन को हम लोग एक देंगे. 8 1 2 3 4 5. 5th पोजिशन, 6th पोजिशन वी डोंट हैव एनीथिंग. ठीक है, so this is the starting material to synthesize the nitrazepam. We have started with the 4 nitroaniline. Then with starting material, the adjacent drug what we are using is benzyl chloride. ठीक है, we are using benzyl chloride. ठीक है, so here what reaction is applying is condensation reaction. So this principle of this reaction is condensation. We are condensing both. ठीक है, so this is benzyl chloride. Benzyl chloride हमने यूज किया. So we are doing condensation. In addition of what we are doing to condense this molecule, we are adding the zinc dust particle. Zinc chloride we are adding. So remember that we are synthesizing the nitrazepam. To synthesize the nitrazepam, what you have taken, the starting material is 4 nitroaniline. In presence of benzyl chloride, the reaction involved in this is condensation. To carry out the reaction, what catalyst we have used? We have used zinc chloride. ठीक है, जिंक क्लोराइड डालने के बाद जो अपने को मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज इन दिस फॉर्म.
So this is in this format. हमको एक 7 membered ring synthesize करना है that is associated with the नाइट्रो जो रहेगा वो नाइट्रो NO2 उधर ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, nothing will going to be happen to that NO2 group. ठीक है, so here यहाँ पे क्या होगा, NH2 रहेगा, वो जो है वो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा. But the reaction, see the reaction could be takes place from this position also, on this carbon atom also, on this carbon atom also. ठीक है, if I am writing here also the 7 membered ring will associated with that, here also the 7 membered ring will associate. Now this can be condensed with this carbon atom, zinc chloride I am adding. ठीक है, जिंक क्लोराइड जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो प्रोटोनेट होके क्लोरीन चला जाएगा, so the reaction will takes place over here, we'll get one carbonyl group over here. ठीक है, one phenolic group. In 7 membered ring we are having one double bond. ठीक है, ये phenolic. Now what else we require? We require the methylic group, we require the carbonyl group, we require the amino group. The name of this molecule is chemical name. अगर हम chemical name की बात करेंगे, 2 second position पर reaction हुआ था अपना, so here it is 2 benzoyl. ठीक है, हुआ था ना 2 benzoyl second position पे, benzoyl it is 2 benzoyl on 4 नाइट्रोएनिलीन, जो ये नेम है केमिकल का, सेम केमिकल नेम 4 नाइट्रोएनिलीन. ठीक है, ये सेम नेम रहेगा. सो कंडेंसेशन ऑफ दिस वी आर गोइंग टू गेट दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. नाउ 7 membered जनरेट नहीं हुआ, स्टिल वी रिक्वायर टू सिंथेसाइज द 7 membered ring. For that what else we required? We required the ketonic group. Glad CH2 ठीक है. Now we take dichloromethyl ketone. When we are taking this, see what will happen. हमने ये लिया, now डाइक्लोरोमिथाइल कीटोन लिया हमने. अब now what we'll get? We'll get the intermediate generating product. यहाँ से मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, I'll write it over here. What we are getting, the reaction will takes place on this methyl group. ठीक है, तो अपने पास ये जो है वो वही रहेगा, phenylic group as it is. ठीक है, NO2 को कुछ नहीं होगा, that is as it is, because our aim is we should have the NO2 group on that position because it is nitrous bond. रिएक्शन क्या होगा, होगा यहाँ पे नाइट्रोजन एटम. ठीक है, one hydrogen atom already exists on top of that. One hydrogen atom will get eliminated. ठीक है, as HCl will get eliminated. One proton plus this chlorine atom. अगर वो चला गया अपने पास, here what we are getting our carbonyl group. ठीक है, कीटोनिक ग्रुप अपने को मिल जाएगा यहाँ पे. आफ्टर दैट जो अपने पास मिथाइल ग्रुप CH2 है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप इज एज इट इज. देन वी आर हैविंग आवर क्लोरीन एटम ओवर हियर. देन ऑलरेडी the carbonyl group is existing over here, then one phenylic group. तो ये तो यहाँ पे है ही है, इसको कुछ लाने की ज़रूरत है नहीं अपने को. ठीक है, ये phenylic group है. नाउ अपने पास नेक्स्ट क्या है अपना रिएक्शन प्रोसेस. ठीक है, वी आर हैविंग क्लोरीन एटम. अभी क्या चाहिए अपने को, वी रिक्वायर्ड, व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड,
to complete the structure we require the nitrogen atom. ठीक है, to get the nitrogen atom on that position and to make this ring cyclize, साइक्लाइजेशन होने के लिए और नाइट्रोजन एटम आने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है. What we have to do here to get the nitrogen atom, we are going to add the NH3 amine group. Then साइक्लिक स्ट्रक्चर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे. You are having more mark on synthesis. Okay, so remember the synthesis, practice the synthetic part. सिंथेटिक पार्ट जो भी है प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया. साइक्लाइजेशन होने के बाद वन मोर नाइट्रोजन एटम वी रिक्वायर्ड, वी हैव टू डू द साइक्लाइजेशन एंड एडिशन ऑफ अमोनिया. आई विल एक्सप्लेन एंटायर प्रोसेस, एंटायर केमिकल रिएक्शन प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजिपम. आफ्टर एडिशन ऑफ अमोनिया एंड कैरिंग आउट द साइक्लाइजेशन, simultaneous reaction will give us the molecule nitrozepam. हाइड्रोजन एटम है ही है अपने पास. now we are having chlorine and we are having carbonyl group over here. ठीक है, and we are having नाइट्रोजन एटम over, the nitrogen atom will come over here क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं NH3. नाइट्रोजन एटम आ गया, HCl चला गया, N ऐड हो गया. देन वन मोर हाइड्रोजन एटम टेक अ पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. ठीक है, डबल बॉन्ड H2O, one proton will get double bond, will get alkene here. Then elimination of what, H2O, elimination of H2O plus HCl, फिनाइलिक ग्रुप बन गया यहाँ पे अपना. साइक्लाइजेशन हुआ इस मतलब वाटर एलिमिनेट हो गया. देन वन फ्लोरीन एटम गॉट एलिमिनेटेड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिपम. यहाँ पे हमको मिल गया नाइट्रोजिपम डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर. सो हियर वी हैव जनरेटेड आवर नाइट्रोजिपम. वेरी सिंपल, नॉट दैट मच टीडियस. what is there, अगर नाइट्रोजिपम सिंथेसाइज करना है, वी हैव टू सिंथेसाइज बिकॉज इट इज स्टार मार्क कंटेनिंग ड्रग. सो वी हैव टू डू द सिंथेसिस फॉर दिस वन. हाउ वी आर डूइंग सिंथेसिस फॉर नाइट्रोजिपम, वी आर एडिंग 4-nitroaniline, condensation of 4-nitroaniline with benzyl chloride in presence of zinc chloride. Zinc chloride, we are going to get 2-benzyl 4-nitroaniline. Addition of dichloromethyl ketone to that, will get intermediate product. That intermediate product on addition of ammonia and cyclization, we are going to get our what, our nitrozepam. ठीक है. So similarly, likewise, we are going to synthesize our nitrozepam. So the brand name of this drug is, brand name, इसका brand name मैं बताती हूँ आपको क्या क्या available है market में. Brand name of nitrozepam, which is used as hypnotic as sedative, both treatment of what, skeletal muscle relaxant, I think so, skeletal muscle relaxant, sedative, hypnotics, treatment of amnesia, सारा बहुत सारे है. The name of brand name of this one is Dormine, Dormine and ब्रांड नेम, मार्केट ब्रांड नेम मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है नाइट्रोजिपम. ठीक है, नाइपाम, नाइपाम एंड नाइट्रोस्यून. सो दीज आर द 3 ब्रांड नेम. अगर आपको आ रहा है देन यू राइट एनी वन ब्रांड नेम ऑफ दिस ड्रग. So this is the synthesis associated with the drug nitrazepam. ठीक है, understood? You are having any doubt? Any doubt?
कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई अभी. Any doubt? We have No, started ma'am. with the diazepam. So last time we have discussed about the chlorodiazepoxide. We know how to write the chemical name for that structure. Okay. So one thing you have to remember, if the category of drug is belonging to the 1,4-benzodiazepine, जो last वाला chemical name है, half of the chemical name you are going to solve by categorizing the drug into some chemical group. 1,4-diazepine है तो लास्ट में सारे 1,4-डाइजेपिन के ड्रग को वही केमिकल नेम आएगा. बट नेक्स्ट वी डोंट हैव नेक्स्ट ड्रग, जो नेक्स्ट ड्रग हम लोग पढ़ेंगे अदर देन टेमाजिपाम, नेक्स्ट ड्रग जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट ड्रग इज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी. अगर वो डिफरेंट कैटेगरी पे इन्वॉल्व है, देन व्हाट वी हैव टू राइट, फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट द कैटेगरी ऑफ दैट ग्रुप ऑफ ड्रग, then we have to write the chemical name. So that is somewhat tedious. 1,4-benzodiazepine के है, ये थोड़ा easy है IUPAC nomenclature. अगर उसके पास और एक one more ring is associated with that one, that is somewhat tedious, because what we have written the IUPAC rule, dissection rule, that we have to apply here. अगर वो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन वी हैव टू अप्लाई द डिसेक्शन रूल टू राइट द केमिकल नेम फॉर दैट ड्रग. ठीक है, दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंट वन. इसको आपको अच्छे से करना है नाइट्राजिपम को, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स ऑन दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, राइट द सिंथेसिस ऑफ नाइट्राजिपम, धड़ाधड़ से लिख दो, जैसे कि 4-नाइट्रोएनिलीन डिजोल्व करो बेंजाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज कंडेंसेशन, यू आर गोइंग टू गेट द 2-बेंजाइल 4-नाइट्रोएनिलीन, then dichloromethyl ketone जब आप उसके अंदर डाल रहे हो, then you are going to get the unstable product. To that unstable product you are adding ammonia and cyclization, you are going to get the nitrazepam. The brand name is, the marketed available name है, that is Dormine, Nipam and Nitrosun. So uses आपको पता ही है, sedative and hypnotic, skeletal muscle relaxant, anticonvulsant, treatment of forgetfulness, all this. Child dose is different, adult dose is different. So it depends on the dose. If it is high dose, then it can be used as hypnotic. If it is low dose, then it can be used as sedative. ठीक है, so time up. क्या है, time है ना अभी? One more drug we can discuss about. क्यों बार बार ये क्लोज हो रहा है? What is going on? I don't know. So synthesis over. Next we will discuss about the next drug. Shall we discuss the next drug? You are having any doubt? 58 students. No doubt, ma'am. Really you don't have any doubt? कोई भी कुछ भी पूछ ही नहीं रहा मुझे. You are getting my points? You are understanding? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ma'am. We'll see the next drug. Similar drug. It is also belonging to the category of 1,4-benzodiazepine. Temazepam. ठीक है, देखो सारे ड्रग 1,4-बेंजोडाइजेपिन के ही है, और वो जो 1,4-बेंजोडाइजेपिन की क्लास नाइट्राजिपाम था, इसलिए नाइट्रो ग्रुप था 7th पोजीशन पे. ठीक है, हियर इट इज टेमाजिपाम. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नाइट्रो ग्रुप ओवर हियर. वी आर हैविंग सेम थिंग सिमिलरली क्लोरीन आइटम एज इट इज, जैसे क्लोरडाइजिपॉक्साइड में था, डाइजिपाम में था. Similarly, in temazepam also we are having chlorine atom except the nitrazepam. नाइट्रोजिपाम का सिंथेसिस, ये पॉइंट याद रखो कि उसका सिंथेसिस हमको देखना है जिसके पास नाइट्रो ग्रुप है. जो स्टार मार्क है वो नाइट्रोजिपाम पे है. सो सिंथेसिस वी हैव टू लर्न अबाउट दैट स्ट्रक्चर ओनली, नॉट दिस स्ट्रक्चर. एक ही सिंथेटिक पार्ट था, वो हमने कवर अप कर लिया, दैट वी हैव डन विद दैट वन. नाउ temazepam, same structure. Here we are having nitrogen atom, but here we are having methyl group.
ठीक है, टेमाजिपम क्यों बोलते हैं इसको बताती हूँ मैं अभी आपको, क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर तो सेम है, ओनली लिटिल डिफरेंस, only little difference, small difference, big change. These are all the derivatives. डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिनाइलिक ग्रुप है एज इट इज, अपने पास फिनाइलिक ग्रुप है टेमाजिपम के अंदर, ठीक है। बट हियर आल्सो वी आर हैविंग द कार्बोनियल ग्रुप। अभी कौन सा स्ट्रक्चर बन गया ये, रिमेम्बरिंग विच स्ट्रक्चर इट इज ऑफ कोर्स डायजिपम, ठीक है। डायजिपम, ये है डायजिपम, ठीक है, भी मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, सेम टू सेम डायजिपम। अगर उसी ड्रग के अंदर इफ वी आर राइटिंग वन अल्कोहलिक ग्रुप ओवर हियर, this is the modification what is done in the drug, this is the derivative of diazepam, that's why the name is different, temazepam. Temazepam contains same structure as it is benzodiazepine, but it is OH group. Then while studying the SAR we have done with this, if on third position if we are having OH group, then what it is, this whole structure is polar, ठीक है। If it is polar molecule, then half life is short, not long. If it is non-polar, then the half life is more compared to the polar group. So it is half life is less because we are having OH group and this molecule will act as a polar molecule, ठीक है। डबल बॉन्ड है, सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है डायजिपम में और टेमाजिपम में, वी आर हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और नंबर जो लेबल करना है हमको, सिमिलरली वी हैव टू लेबल लाइक, वैसे लेबल करेंगे 1, ठीक है, 2, on second position we are having carbonyl group, 3, 4, between 4 and 5 we are having one hydroxyl group, 6, on 7th position we are having क्लोरीन एटम। अब केमिकल नेम जिसका इसका जो रहेगा सेम रहेगा डायजिपम का, जो इसका है उसका सेम रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ हाइड्रा व्हाट यू आर गेटिंग, इंस्टेड ऑफ हाइड्रा यू आर हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यू आर हैविंग OH ग्रुप। हाइड्रा तो आएगा ही आएगा, बट यू हैव टू राइट द पोजीशन, हाइड्रा ही है ये, हियर you don't have any kind of saturation, that also you have to write. Apart from that you have to mention the hydroxyl group which is present on the third position, that also you have to mention in the IUPAC name. Now I am writing the IUPAC name for this structure. IUPAC name लिख रही हूँ मैं, ठीक है। Now I am writing IUPAC name for this structure, कैसे लिखना है that also I know, अभी आप अपने से लिख लो। if you are sitting with pen and paper then try to write 7 on 7th position, नंबर मैंने पहले ही लिखा है, on 7th position I am having chlorine atom, chloro, ठीक है, chloro। then after chlorine atom what I am having else, hydroxyl group। on third position what I am having, what we are having in the structure, 3 hydroxy, hydroxy। on third position we are having hydroxyl group, hydroxy। on first position what we are having, 1 methyl group, ठीक है, 1 methyl group we are having, ठीक है। apart from methyl group what else we are having, on fifth position we are having what we are having, phenyl group, ठीक है, on fifth position we are having phenyl group। and similarly third is saturated, then we'll write it is having hydra, double bond नहीं है उसके पास, 3H, it is on third position we are having hydra, so belonging to the category of 1,4-benzodiazepine, ठीक है, 1,4-benzodiazepine, ठीक है। और क्या है अपने पास, what else we are having, what else we are having, on second position we are Ketone having group. ketone, excellent, हो गया ना, कुछ नहीं है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है बस, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर याद रहेगा IUPAC नेम,
डायजेपम का और टेमाजेपम का सेम रहेगा केमिकल नेम, बट ओनली डिफरेंस इज ऑन थर्ड पोजीशन यू आर हैविंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, ऑन सेकंड कीटोन. सो दिस ड्रग पर्टिकुलरली फॉर हिप्नोटिक्स, नॉट अदर यूजेस. दूसरे कोई यूजेस नहीं है इसके, ओनली वन यूज दिस ड्रग इज हैविंग हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स, ओनली हिप्नोटिक्स, ठीक है. अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप में ओनली हिप्नोटिक्स, व्हाई इट इज ओनली हिप्नोटिक्स, इट इज पोलर वन, ठीक है, इट इज पोलर मॉलिक्यूल. अगर हम इसकी हाफ लाइफ कम है, so short duration of sleep can also produce with the temazepam, ठीक है भाई, उसको नींद नहीं आ रही, if the patient is associated with the restlessness, in that case we are going to prescribe the temazepam, short acting drug. This one is short acting. Short acting means it is polar molecule, it is not having the long half life, it is short half life, easily it is dissolved and easily it will get eliminated because it is having the polar group on this position. अगर कंपेयर टू दिस टेमाजिपम अगर हम लोग देंगे टू ट्रीट द हिप्नोटिक्स, पूरा डीप स्लीप में चला जाएगा, सेम डोज अगर हम लोग देंगे, ठीक है. सो दिस ड्रग इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर हिप्नोटिक्स, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज पोलर. We can't use this one for other disorder which were associated with the central nervous system, ठीक है. Uses is over, chemical name, the last structure is, so this one is over. एक मिनट, क्या बोल रहे मैसेज में, कुछ लिखा है कि बच्चों ने मैसेज में. लेक्चर स्टार्ट हो गया, ओके, लेक्चर स्टार्ट, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया क्या, ठीक है, ओके, we'll stop over here. In the next class we are going to discuss about the alprazolam, ठीक है. Okay, take care. Attendance, I think so, I expect that you have gave the attendance. Take care, bye bye, Allah Hafiz.